Yes, good morning, students. In continuation of our Java programming, today is the day 8. So, in this day 8, we will learn more deep towards the class and object. So, in this class, we will understand very important terms like type of Java variable, create an object, create multiple objects, using multiple classes in one file, using private data member, using multiple class file, and lastly we will see the one live example to read and write student detail. So very first we will understand type of Java variable. So Java variable available in the four types. One is the name, local variable, instance variable, and static variable. So try to understand the definition, characteristics, and difference between these three that is the local, instance, and static. So local variable are those variable which declare inside the body of the method. जब भी मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट वेरिएबल कॉल्ड एज ए लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसे हमको समझना है. तो वी कैन से कि दिस वेरिएबल only available for that method in which that have declared. जिसके अंदर उसे डिक्लेयर किया है उसी के अंदर वो वेरिएबल अवेलेबल होगी. अदर मेथड इन क्लास आर नॉट even aware of that created variable. So it is very much become the private concept, and this kind of local variable cannot defined with the static keyword. So this is the special characteristics of local variable. Now instance variable are those that are declared inside the class के अंदर उसे डिक्लेयर करेंगे but outside the body of that method के अंदर नहीं करेंगे, बाहर करेंगे. अंदर करने से क्या होगा, लोकल बन जाएगा. तो बाहर करेंगे तो इंस्टेंस बन जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल. इट इज नॉट डिक्लेयर एज ए स्टैटिक. इसको स्टैटिक जैसा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वर्ड. ठीक है. Why we are calling this instance variable? Because its value is instance specific. कोई permanent चीज नहीं रहेगी. It is an instance specific and is not shared among instance. तो दूसरे instance के साथ ये शेयर नहीं होगी. Now static variable, a variable that is defined as a static is called a static variable. तो एक कीवर्ड रहेगा हमारे पास जिसको हम स्टैटिक बोलेंगे. उस कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो दैट वेरिएबल इज नोन एज ए स्टैटिक वेरिएबल. इट कांट बी लोकल वेरिएबल. ये लोकल वेरिएबल नहीं हो सकता. एंड you can create a single copy of this static variable. Let we have three objects and they all are sharing of this static variable. So all object will get a that shared memory. So this will be the share it among all the instance of that class. So this is called as a static variable. So memory allocation for static variable happen
only once when the class is located in the memory. So let we have one object, and this object actually let have three objects, say A, B and C. Now this all three object, let we have one static variable. So this static variable actually shared with this three kind of this object. So this is about the complete your types of Java variable. तो अब हम देखते हैं एक example. Now in this example, let I have three important variable. The first variable is the local variable. तो देखिए local variable are local to this method. ये method के अंदर बनाया है. तो this method, that's why this n is equal to 90 will be called as a this method. है ना, इसको method बोलेंगे हम. तो let we have the local. तो local is a your int n is equal to 90, and this is declared in the your this method. Method के अंदर ही इसको बनाना है. Okay. Now come to the your instance variable. तो देखिए instance variable actually declare in the class and this is outside the method. Method के अंदर नहीं है, ये हमारे main के अंदर रहेगा. तो this is your type of the your instance variable. Now let we have static variable. So this static variable is nothing but static to this variable m. So one copy will be there and may be possible shared by the all. So this is called as a static variable. So let I have a one example in which my static variable as with the m is equal to 100, and let I have one local variable, say 90. So whenever we will add with this m with n, we should get 110. So as soon as we will get 110, we will get the output with this m and n. So new m is a 110 and new n as a 90. So here we will get 200. Now the same can be used in the main method. Let we have another variable, that is the data 50. So here we will get a output as a 50, no problem. Now we are calling this method. As soon as we will call, so we will get 110 and the 200. And let we want to go for this m. m के लिए हमको जाना है, नया m मिल गया है, तो पुराना m 100 है, तो नया m you will get what? That is the 110. So likewise you can easily manipulate this local variable, instance variable and what? Your static variable. Okay. Now in the next slide we will see the creation of an object and print the value of this x. तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है how to create an object, that is called as a my object. तो ये मेरा object का नाम है, that is the my object. तो this my object is really get value x and that will be get print on a screen. ठीक है, तीन चीजें करनी है. सबसे पहले x में 5 डालना है, फिर इसे प्रिंट करना है और हमें माई ऑब्जेक्ट के द्वारा काम करें. तो लेट आई हैव दिस कंप्लीट प्रोग्राम इन विच वी हैव ए मेन मेथड नोन एज ए मेन. तो मेन मेथड को हम मेन क्लास को मेन बना रहे हैं बिकॉज बाय दिस क्लास वी विल सेव द our file also. Now main method, in main method what we are doing, we are creating an object. यहाँ पर object create हो रहा है, देखिए ध्यान से. तो this is the name of object.
माई ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मेन क्लास। क्या बोलेंगे आप? जो माई ऑब्जेक्ट है उसका क्लास क्या है? मेन क्लास। एंड हियर वी आर creating by this new operator. So dynamically we are creating this object now, and we are using the constructor. It is known as a your actually manager है, constructor हो रहा है, तो construct में empty parenthesis is there, तो no default no new value is there. That will be the default value is there of this my object as a 5. Okay, so by object we have a one value, that is the 5. We are not calling this 5, but automatically this my object will get a your 5 value here. So as soon as means let we have this class. देखिए मेरे पास में क्लास है भाई, है ना, एक चीज याद रखेंगे, हाउ वी कैन विजुलाइज द कंसेप्ट. लेट आई हैव दिस क्लास, तो इन दिस क्लास यू आर क्रिएटिंग दिस माई ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. दिस इज द यूर माई ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस क्लास? द नेम ऑफ क्लास इज मेन. यहाँ पर क्लास का नाम क्या है? इट इज ए यूर मेन क्लास. ठीक है, so I will write here the word main class. Now what will be the object name? Object is my object. And whenever we will create this, actually है ना, जैसे हम इसको create करेंगे तो let I have this arrow sign. तो by this arrow sign we will create, and this my object actually get value. The value is x is equal to 5. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट थॉट ऑफ दिस प्रोग्राम. तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वी शुड गेट व्हाट वैल्यू, हमें वैल्यू क्या मिलेगी? नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रिंट, तो वी हैव टू गेट ए यूर वैल्यू 5. बट सी द मेथड हाउ वी आर कॉलिंग दिस मेंबर x. तो हम x को कॉल करना है, तो x ये इट शुड बी कॉल्ड बाय दिस माई ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं केवल यहाँ पर x लिख दूं तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा. वाई? बिकॉज दिस इज नॉट ए लोकल वेरिएबल. तो आई विल शो यू बाय दिस लाइव एग्जाम्पल. तो लेट आई हैव एग्जाम्पल. अब इसको हम लोग करके देखते हैं. लेट आई हैव एग्जाम्पल. In this example, very first I will change this is as a Java. So in Java basically we have one program in the Java. इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं. Now let I have this my Java and which we have this class. So let first run this program and check whether we are getting a output hello world or not. Yes, I am getting a hello world, means my concept is, my compiler is okay to give the answer. Okay, now what we have to do? We have to make a your हमें क्या बनाना है? We have to make a one object, my object. देखिए my object बनाना है. तो let this is the my main class. This is the my main class. Now in this main class, what we are doing? We are very first make a method. ये hello world को क्या करते हैं अपन? add of program कर देते हैं. Let end of program. ठीक है, तो आप पहले इसको फिर से रन करके देखें तो we should get a end of program. तो देखिए end of program मिल रहा है. I mean this program is ready to execute the class and object. तो देखिए अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्लास तो हमारे पास है. वी हैव ए मेन क्लास. तो हमारे पास मेन क्लास है, तो आई कैन से आई हैव दिस class name as a main, and in that main we will create one object, that is my object. ठीक है, तो let I will create this object. तो कैसे करेंगे देखिए. तो very first I have this
क्लास। तो सबसे पहले क्लास का नाम क्या है? लेट द नेम ऑफ क्लास इज मेन, then name of the object my object, and this object should create by new operator and with the constructor of mean as a 0. So let I have created my object. Now I want to run and check whether any logical error is there. No, there is no logical error, everything are okay. Now let I have this main object. So in this main object I have to make a output. तो आउटपुट मैं बना के देखता हूँ and here I will write my object. ठीक है, my object मैंने लिखा. तो whether we will get a output of this my object, so we will not get, basically the concept is we have this only the object address is there. तो यहाँ पर कुछ हमें एक pointer मिल रहा है and by that we are getting a this my object. Okay, now let I have one variable, say int x is equal to 5. This is the your my data member. ये क्या है हमारा? This is the your data member is here. Now here we have a main method, that is the member function. So let I want to get output of this x here. तो क्या मैं यहाँ x लिख दूँ तो चलेगा? Let try to understand. This x is not a local variable, तो I should get a error. हमें error मिलेगा. And we are saying this non-static variable x cannot be referenced to this is static context. So if I will change here int x is equal to 5. So in my program there are the two x is equal to 5. So again I am running this program. Now tell me if any error is there. No, there is no error, and we should get a x is equal to 5. So which x? This x or that x? Which x? Basically this x is eligible to display here because it is a local variable. Okay, so let I do not want to use the local variable. I should make a comment of this. I should get a output from this x. Now try it. Again you will get a one error. Why? Because this x is not a your static non-static variable. X cannot be referred from this static constant. हमारा मेथड क्या है? स्टैटिक है. अगर ये स्टैटिक बना दें तो यहाँ पर काम हो सकता है. ठीक है, नाउ सी this is the static. Okay, so let the variable become is the static. So now I can get a that is the 5 and end the program. देखिए यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, because my static method can call the static all variable only. So it means by static method you can't call the non-static variable. Okay, so here this is the one important note. Now let I want to use this static without static. अब मुझे without static करना है. तो देखिए without static के लिए क्या करना पड़ेगा? I should use this my object. तो my object with the your x. तो x is a actually contain of the my object. तो अब मेरे को यहाँ पे 5 मिलना चाहिए. So I should get a 5 here. So likewise you can use your object for this one. तो हमने यहाँ पर local variable भी देख लिया. Then that will be your what as a called as a your static variable भी देख लिया मैंने. Now I will explain the next important concept that is known as a your multiple object. तो देखिए यहाँ पर multiple object हम बनाने वाले हैं. तो multiple object let I have this int x. तो int x is a class. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये class है. ठीक है, this is my class. तो this is class. तो by this class you are making it to object. Say object 1. This is the object 2. ठीक है, object 1 and object 2 is there. So like that you can create
the two object of this class X. ठीक है. Now in this class X we have a X is equal to 5. But let suppose this is a your object 1 and object 2. अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम. तो let I have a two object. Now in this object what we want? We want कि we have to update the our this x को मुझे अपडेट करना है. ठीक है. तो let I have this x की वैल्यू कितनी है अभी से I have a x की वैल्यू जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो x की वैल्यू 5 होगी. And now see again you are creating one more object तो x is equal to 5 होगा. So in this object x is equal to 5 is there and in this object x is equal to 5 is there. From this class we are taking the two object. Okay. Now as we want to print, अब मैं इसको print भी कर दूंगा. अब print करने के बाद let I will increment this one. मैं इसे print को x plus 1 कर देता हूँ. So I should get x is equal to 6 here in this object. And as I will change 5 plus 2, so I should get here x is equal to 7. मुझे मिलना चाहिए. ठीक है ना. So we will check this all possibility in the object manipulation. So as soon as you will assign this my object 1, my object 2 and by default you should get a 5 and 5. तो फर्स्ट आउटपुट हम चेक करेंगे हमें 5 5 मिलना चाहिए. फिर हम इसमें अपडेट करेंगे इन द ऑब्जेक्ट 1 तो आई शुड गेट ए x is equal to your 6 after the update and here you should get x is equal to 7 मुझे मिलना चाहिए. तो चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ. तो लेट आई हैव let I have this program in which I have to create two objects. So object 1 is there and one more object say main and my object 2 is equal to new with this main. Okay. So let in my program there is a one data object है ना. ध्यान से देखिएगा. Here we have this one as a your data member and we have two object here. ठीक है. तो whenever we have two object we have to say which should be your two output. तो system my object 1. ठीक है. तो here you should get a 5. अब क्या करेंगे. अब फिर से हम इसको क्या करेंगे. इसको हम एक सेकेंड. इसको हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे एंड देन वी विल मेक ए दिस कंसेप्ट. ओके. तो लेट वी विल कॉपी टू सी दिस आउटपुट हियर आल्सो. तो लेट वी विल सी. Okay, so here we will change this object. Now say this object is 2. ठीक है. तो by this object 1 and object 2 you will get a answer as a 5. So 2 5 you will get and then end of program. Now check. So you should get a 5 and 5 and end of this program. So I have to clarify whether we are getting this from my object 1. This is my from my object 1 and then we have to say from my object 2 is equal to this. तो we should clarify कि किससे क्या चीज मिल रही है. तो ऑब्जेक्ट 1 से 5 मिल रहा है एंड ऑब्जेक्ट 2 से भी 5 मिल रहा है. ओके. तो लेट नाउ वी विल चेंज इन द ऑब्जेक्ट. अब मैं देखिए इसके अंदर मैं चेंज करने वाला हूं एंड आई विल से टू चेंज दिस कंसेप्ट.
Now in this object1, my x should be changed as a 6 and here should be changed as a 5. तो देखिए कैसे मिलेगा, उसको इस तरीके से कर सकते हैं. तो my object x, this is x is equal to my object 1 with x plus 5. 1 with your 1 is there. So you should get what? 6 here. तो यहाँ पर 6 मिलना चाहिए अब. और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? My object 2 and then x is equal to my object again 2 with x plus 2. I should get here 7. तो देखिए ये चीज मेरे को चाहिए as we want to change in the object only. So here we will get 5 and a 6 and 7 and end the program. So as we will change, so we should get this concept as a object 1 6 and object 2 as a 7 and end of object is there. Now I want to check whether my original object class contain 5 or not. So I will create one more object, say my object 3. ठीक है, एक और क्रिएट करते हैं हम. नाउ द नेम इज मेन क्लास में से न्यू लेके एंड दिस इज योर मेन. ओके, नाउ वी विल चेक द ओरिजिनल वैल्यू is as it is or that value actually have changed. तो ये हम चेंज करके अब चेक करके देखते हैं. ठीक है, now here we will say my object 3. अभी object 3 में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए. We should get either 5 है ना, या फिर 6 या फिर 7. क्या मिलेगा? तो in according to our theory we should get a 5 here. क्यों? क्योंकि this is original value. ठीक है, तो I will check this program and we'll see this one or not. तो अभी मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि you should get the original value. ठीक है, देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो here I am getting a very first error मिल रहा है. तो here we have a error. तो error क्यों मिल रहा है? तो we will check why we getting a error. error क्यों मिल रहा है? तो constructor main in the this one. Okay, oh क्या से क्या कर दिया मैंने. It should be not here, it should be here. ठीक है, थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया इसलिए ऐसा हो गया. Okay, now run this again program and check whether you are getting. Okay, now see that this original value 5 change with 6 change with 2 you will get a 7. So this is actually very important characteristics of your object oriented. Okay, so this is called as a multiple object. Now come to the using multiple class. I have two class. The one is the your second class and we have a one main class. ठीक है, तो in the main class we have a one object, that is the my object, but this object of this second class. So I can immediately access the member of this second. Likewise, we can also think about the two classes in a program. So we will see this live program. So here what we have to change, we have to first delete this all. इसको सबको delete कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. Now come to the our two classes are there. One class is second. ठीक है, in this second
we have, ठीक है, second, and this is the actually your मेन क्लास। तो दो क्लास है मेरे पास, एक सेकंड क्लास और एक मेन क्लास। तो लेट वी विल क्रिएट क्लास सेकंड। इन द सेकंड क्लास वी हैव int x is equal to 5। तो ये सेकंड क्लास है। लेट आई हैव another class, that is the main class, in which we have our what, we have our main method। so main method is there। so in this main method we have to create object of this second। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। तो let I will create second with the my object is equal to new, and then your second of this constructor, this one। okay, now print, in this print we will print my x। तो can I get output value of x as a 5? क्या 5 मिलेगा कि एरर मिलेगा? तो let we will check, हमें एरर मिलना चाहिए। क्यों? because it is x is not find by this our instruction। तो ये जो x है it should be called by this my object। my object से इसे कॉल करेंगे, then we can easily get the value of this x as a 5। तो देखिए we have a two class, this is the first class and this is the your second class। so in second class we have a, in the main class is a my object of this second class। so likewise you can make very easily। so this is your multiple classes is there। now come to the your next program in which multiple classes, ठीक है ना, we have a multiple classes। ये जो था हमारा a multiple classes in one program है ना, ये आपका था in a program। ठीक है, this is in a program, but let we have this concept in which we want to create using multiple class in the multiple, or we can say in the two file है यहाँ पे। one is the second and second is the your main file। तो let we will create this program in the second। तो second में इसको create करेंगे, main में इसको create करेंगे। तो let very first this main, तो main को create कर लेते हैं। now say this is your main। तो मेन के अंदर ये आ गया। नाउ वी हैव टू मेक ए अनदर फाइल। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, न्यू फाइल। तो लेट वी विल क्रिएट ए न्यू फाइल। द नेम ऑफ फाइल इज सेकेंड जावा। ठीक है, इसको मैंने बनाया। तो लेट आई एम गेटिंग ए टू program file, one is the main and second is the your second java। okay, now we have to make a your main के अंदर हमको बनाना है। तो this is the my main। now come to this second में हमें क्या बनाना है, this is my second। तो from this second, अब मैं second में बनाता हूँ। तो this is in the second, this is in the main। तो देखिए ध्यान से, main में main आ रहा है, second में second आ रहा है। तो when we will run this main program we should get a output like a 5, because in the second we have a one value 5 and we have a one write data method। तो in this method हम x को clear display कर रहे हैं। तो now we are creating the object of this second। तो we are calling this method by your my object, and after that we should get a output with this one। so here we are actually calling and then getting this one। so by this calling method you should get 5 here, and by this variable you should get a 5। तो देखते हैं हम कि हमको 2 5 मिलते हैं कि 1 5 मिलता है। तो देखिए लेट यू आर गेटिंग ए 2 5 मीन्स
1 5 फ्रॉम दिस सेकेंड, है ना, ये यहां से मिल रहा था 5 बिकॉज इट इज एक्चुअली राइट डेटा एंड हियर वी आर कॉलिंग दिस वन. ओके, तो वी हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर दिस डेटा मेंबर. इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव ए वन वर्ड दैट इज द प्राइवेट. तो प्राइवेट int x is equal to 5. So as we will use this one, now try to run this program main. तो main को call करते हैं. Now we will get a one here, है ना, we are getting a one error here. क्यों भाई? अच्छा, स्पेलिंग गलती हो गई. ओके, स्पेलिंग गलती है ना, स्पेलिंग को तो ठीक कर सकते हैं. तो दिस इज योर प्राइवेट. Now again run this program. इसको फिर से रन करके देखते हैं. Now we will get a your object x. Now I am getting a error. मुझे error मिल रहा है. कहाँ का error है कि ये main Java में fifth line, main Java में fifth line. तो this is the actually your error. क्यों? क्योंकि हम x को अब access नहीं कर सकते हैं. तो instead of this execution line, make a comment. अब देखिए, इसको रन करके देखेंगे. वी शुड गेट ए ओनली 1 5. अब 1 5 मिलेगा और जो मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपको मिल रहा है मेथड से. तो मेथड इज योर पब्लिक एंड दिस इज योर प्राइवेट. तो लाइकवाइज वी कैन मेक आवर प्रोग्राम बाय दिस प्राइवेट. तो ये प्राइवेट से किया था, तो ये यहाँ पे एरर आ रहा था. ओके, नाउ कम टू दी योर one program in which what we have a length and width. We have a length and width is a one is the rectangle class is there, and this class actually saying there are the two member, one is length, second is the width, and we will actually get data. तो get data ये है, and then calculate this area by this, multiply this one and display this area. Okay, so we will think to run this program. तो here there are the two main. तो दो प्रोग्राम है, पहले इसको रन करके देखते हैं. तो here we have a one object. ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास. तो as we will run this program, we will read this get data. तो यहाँ से 5 और 10 को रीड कर लेंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे. तो we should get a 50. तो यहाँ 50 मिलेगा. अब वही प्रोग्राम को एक बार और रन करिए आप. उसमें क्या करेंगे, यू चेंज दिस डेटा, क्योंकि ये डेटा अभी एक्सेसिबल है, तो आप डेटा को चेंज कर सकते हैं. तो चेंज करा मैंने, 5 to 50 हो गया एंड 10 to 100 हो गया. तो इन दिस टाइम वेन एवर यू विल कॉल दिस मल्टीप्लीकेशन. अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन को भी मैं खुद ही कर रहा हूं, मैं मेथड कॉल नहीं कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि ये एक्सेसिबल है. इस कारण से वी शुड गेट ए आउटपुट लाइक ए 50 into 100, that is the 5000. तो दिस इज द एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कि हाउ वी आर गेटिंग दिस ऑल कंसेप्ट. ओके, तो लेट स्मार्टली वी विल कंप्लीट दिस क्लास. तो वी हैव, ये मैंने आपको बता ही दिया कि main Java and the second Java is there. तो by this we can run this program. तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया. Now we have a last program. In this last program we have this concept जिसमें हमें क्या करना है कि we have to run the program using the read and write student detail. तो सबसे पहले we have to create a student class in which we have to create two data member and we have to create two member function. One is read data, second is write data. Now make a one class in which class you make a one object like a student1. Through student1 you call read data and you call write data. ठीक है, तो likewise you can make a your complete program. Okay, thank you to all.